Hello and good morning, my dear students. Hope you are enjoying our online lectures. Today we are here with a poem to a photograph. A photograph itself a word which relates to our past, or we can say our sweet memories, right? So in this poem also something is related like that only. It's all being about a photograph of poet's mother, right? And how poets describes his mother's photograph, all such memories and everything, right? Somewhere she recalls her mother's smiling face, right? So let's move on to the poem now. A photograph by Shirley Tolson. Let's move to the summary. The poem, a photograph, is tribute paid by the poet Shirley Tolson to the memory of her mother. So we got an idea that this is a tribute is given by a poet to her mother's memory. Okay. An old photograph of her mother when she was 12 years old is pasted on a cardboard. So ये कब की बात है, जब उसकी मदर, ये जो फोटोग्राफ को शोयली देख रही है, राइट, ये फोटोग्राफ में उसकी जो मदर है, she herself was 12 years old, right? And this photo is been pasted on a कार्डबोर्ड. अगर आप पुराने एल्बम्स देखते हो, इफ यू सर्च आउट द ओल्ड एल्बम्स, राइट, वी कैन से अराउंडली 70s 80s के एल्बम्स अगर देखो, सो यूजुअली उस वक्त के जो एल्बम्स होते हैं वो आज की तरह बिल्कुल नहीं होते. द फोटोग्राफ्स आर पेस्टेड ऑन अ कार्डबोर्ड. एक कार्डबोर्ड पे फोटोज को पेस्ट कर दिया जाता था, वैसे एल्बम्स हुआ करते थे तब. So ये भी काफी पुरानी बात है, we can say. The photograph was taken by her uncle on a sea holiday. So it describing that के photograph कब का है और कहाँ का है. कब का है, we got the idea that it was when she was 12 years old, and it is this photo is being taken by her uncle. Whose uncle? That Shirley's mother's uncle, right? On sea holiday, when they went to the sea holiday, तब उसके uncle ने, मदर के अंकल ने ये फोटोग्राफ लिया था. The mother was with her cousins Dolly and Betty paddling in the sea water. So ये जो फोटो है वो कहाँ लिया गया है? While they were paddling in the sea water with her cousins. Okay, paddling in the sea water, we can say move through water in a boat using a paddle. Okay, so the mother was with her cousins Dolly and Betty and her uncle. Okay, the wind had blown their hair on their faces, which were full of smiles of joy and fun. So सी बीचेस पे जब भी हम यूजुअली बीचेस विजिट करते हैं, राइट, वी हैव lots of fun, obviously joy and fun, but with that we found lots of wind over there, right? बहुत fast moving air we can found, right? So क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बोट पे हैं, राइट, while this photo was taken. So in photo it is clearly mentioned that wind had blown their hair on their faces. उनके जो बाल हैं, उनके जो hair है वो उनके faces पे आ रहे हैं. But we can also found that there is a full of smiles of joy and fun. They were enjoying a lot this moment. Okay, the photograph brought back memories of a mother's childhood much before the poet was born. So this photograph brought back memories of mother's childhood. See, यहाँ पे ये जो poem है इसमें तीन stages बताए गए हैं. The first stage was mother's childhood. Okay, यहाँ पे हम it is written by a poet, but poet ने अपनी mothers के childhood का जो photo है उसको describe किया है, जब poet born भी नहीं हुई थी, right? The poet was born before that, उसके पहले का है. Some 20 or 30 years later the mother looked at the snapshot. So कुछ 20-30 साल के बाद what happened, we usually does ना कि फोटोग्राफ होते क्यों हैं, वही सारी मेमोरीज को कैप्चर कर लेते हैं फोटोग्राफ्स, राइट? यूजुअली हमारे हमारे हार्ट में, हमारे मन में कहीं ना कहीं वो सारी मेमोरीज होती है, बट फोटोग्राफ उसे क्या कहते हैं, उसे लाइव कर देते हैं, राइट? सो वो मोमेंट को ऐसा लगता है कि हम फिर से जी रहे हैं. सो फोटोग्राफ क्या करती है, हमारी वो सारी मेमोरीज को रिकॉल करवाती है. ईच एंड एवरी मूवमेंट, एवरी एस्पेक्ट, द पर्सन, द प्लेस, द फन, एवरीथिंग वी रिकॉल्स related to that photograph. So here also, after 20 or 30 years later, mother looked at the snapshot. कुछ 20-30 साल के बाद मदर के हाथ में वो फोटो आया और वो उसे देख रही है. And laughed at the beach dresses they were made to wear.
यूजुअली होता है ना, व्हेन वी वॉच्ड आउट आवर ओल्ड फोटोग्राफ्स ना, या तो हम कभी छोटे हैं, वो फोटोग्राफ्स अगर कभी आप देखो तो आपको देख के हंसी आ जाती होगी कि यार मम्मा ने कैसे कपड़े पहना दिए हैं, या ये कैसी मैंने स्टाइल दी है, या कैसा मेरा फोटो आया है, राइट। वी समटाइम्स लव ऑन आवर फोटो, राइट। सो यहाँ पे भी वो मदर क्या कर रही है, वो जब फोटो आफ्टर 20-30 years के बाद देख रही है तो शी लव्ड, क्यों, वो बीच ड्रेसेस देख के हंस रही है क्योंकि शी हरसेल्फ वाज 12 years ओल्ड, राइट। सो उसे भी ऐसा लगा कि क्या पहनाया है मुझे, एंड रिमेम्बर द केयर फ्री हैप्पी डेज, बट समवेयर शी इज मिसिंग हर childhood days, right? She remembering that carefree happy days, because एक बात के बाद जब आप मैच्योर हो जाते हो, राइट, आप बड़े हो जाते हो, सो यू ऑलवेज रिमेम्बर ऑल सच चाइल्डहुड डेज, राइट। वो मेमोरीज कहीं ना कहीं बार बार आप रिकॉल करते हो, यू अगेन फील लाइक के फिर से एक बच्चा बन जाना चाहिए, राइट। सो ये ऑलवेज होता है, सबके साथ होता है। सो हियर ऑल्सो दैट मदर इज रिकॉलिंग ऑल हर केयर फ्री हैप्पी डेज, बिकॉज जब आप एक बच्चे होते हो, राइट, तो आप बहुत ही ज्यादा केयर फ्री होते हो, आपके लाइफ में कोई टेंशन नहीं होता कुछ, मतलब यू जस्ट एंजॉय योर लाइफ एट फुलेस्ट, ओके। उसे कैसे भी पूरी तरीके से आप एंजॉय करते हो अपनी चाइल्डहुड लाइफ को, राइट। सो लेट्स मूव। So the poet recalled that it was nearly 12 years since her mother passed away. See, यहाँ पे एक तीसरा फेज भी देख लो. First phase was when the mother as a child, right, the childhood of the mother we can say. Second phase आया कि the mother in her middle age, right. So the mother in her middle age watching that snapshot and remembering or recalling all her memories in front of Shirley, right. And the third phase was the period of life of the poet after her mother's death, right. So poet क्या कर रही है अब, poet is recalling the day. What day? See, the poet recalled that it was nearly 12 years. आज उस मिडल एज में जब वो मदर ने स्नैपशॉट देखा था, तब जो भी कुछ हुआ था, आज आफ्टर 12 years, उस बात को भी 12 years हो गए, आफ्टर दैट the poet is recalling that day कि how mother was looking to the snapshot, how mother had described everything related to photo, right. And that laughing of a mother, that smiled face she cannot forget, राइट। तो आज वो पोएट खुद रिकॉल कर रही है, नियरली 12 years since her mother passed away. Now her mother is no more, right. And when she looked at the photograph, memories of her mother's smile came to her. See, photograph को किसने जिया है, right. It is being lived by mother, because it that photo is related to mother's memory, mother's childhood days, okay. But now the memory that poet is recalling is when her mother took the photo and she was describing everything, she was smiling, she was laughing, she was recalling that day, right. और वो शर्ली उस वक्त उसके सामने ये सब फील कर रही थी, वो देख रही थी, right. आज वो चीजें, वो स्माइल, right, that smile she is recalling today after 12 years since her mother passed away. She understood the difficulty to ease the loss and void that she was feeling. See, बहुत बार ऐसा होता है कि our loved ones, when they are no more, we always miss them. But somewhere कहीं ना कहीं हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी, कि हम उस लॉस को कहीं ना कहीं हमें हमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वी हैव टू बेयर इट, ओके। बट वो फीलिंग जो है, राइट, कि हमारा कुछ लॉस हो गया, वो फीलिंग है, वो ऑलवेज हमें याद रहती है, राइट. इट मेक अस इमोशनल. सो हियर the poet somewhere being emotion that she understood the difficulty to ease that is comfort the loss, right. वो loss हो चुका है, उसकी mother passed हो चुकी है, passed away, she is now no more, right. But all that memories is still with her, right. और वो feeling जो है, that is make her so much emotional. The silence caused by the passing away of a loved one just makes a person silent and unable to utter any words. See, whenever we are so much emotional, right, we don't we do not need to require any words to describe it. Silence works more, right.
सो साइलेंस कॉज्ड बाय पासिंग अवे ऑफ अ लव्ड वंस, कभी भी हमारे जो भी लव्ड वंस है राइट, वो जब चले जाते हैं इन थ्रू आउट ऑफ आवर लाइफ राइट, बट दैट प्रेजेंस वो सिर्फ फिजिकली कहीं ना कहीं डिसअपियर हुए हैं, बट हमारे हार्ट में दे आर ऑलवेज देयर. But even though we missed them, even though we recall all such days we passed with them, right? So but sometimes what happened कि persons के पास उस feelings को describe करने के लिए words कम पड़ जाते हैं. We do not find enough words to describe the feeling related to that person who passed away. The photograph highlights three stages, right? We have already discussed the three stages. First is the childhood of the mother, right? When she was 12 years old, and when she visited to the sea beach, and the photograph is taken with her cousins, and right, then another is the mother in her middle age. So this was the age when mother is looking to the snapshot, that photograph, and recalling all her childhood days, right, describing all such related aspects of that photo, and the period of life of the poet after her mother's death. And the third stage is when the poet is recalling that day when when her mother described everything about the photos. Okay, so after her mother's death, that was the third stage. So now let's move on to the poem, right? A photograph. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Right, क्या बोला है यहाँ पे? Cardboard shows, cardboard here means the photo. Okay, because the photo is being pasted on the cardboard, that's why यहाँ पे photo describe नहीं किया, instead एक word use किया, that is cardboard, and that cardboard means a photo, right? So what she is telling, the cardboard shows me means who? The poet. How it was when the two girl cousins went paddling. Two girl cousins, right, that is mother's cousins. Okay, so the cardboard shows me how it was. यहाँ पे वो mother recall कर रही है कि वो days क्या थे when she was with her cousins went paddling, when they were on the sea holidays and paddling on the boat, right? Each one holding one of my mother's hand. What happened? Poet is telling कि दोनों ने mother के hand को पकड़ के रखा था. Who? Two cousins, that was Betty and the other was Betty and Dolly, right? So both have holding the hand of her mother, right? And she was the big girl. क्यों पकड़ के रखा था? Because that mother was a big girl. शायद वो Shirley और Dolly एज में उससे छोटे होंगे, some 12 years or so, right? So यहाँ पे एज किसकी डिस्क्राइब की है? The mother. Okay, she was describing the age of her mother, that she must be 12 years of old. All three stood still to smile through their hair, right? What happened कि now एक सीन हो रहा है कि वहां पे फोटो क्लिक हो रहा है. whenever we click the photo, right, we always stand still. Okay, so क्योंकि फोटो खींच रहे हैं तो तीनों के तीनों, that two cousins and mother stood still, कोई भी मूवमेंट किए बिना मोशनलेसली वो खड़े हैं, जबकि उनके जो हेयर है वो बहुत ही ज्यादा ब्लो कर रहे हैं इन द विंड, राइट? उनके हेयर उनके फेसेस पे आ रहे हैं, बट वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे while having that photos, right? At the uncle with the camera, who is clicking the photo? That is the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. What she is telling? Who? The poet is telling that a sweet face, क्योंकि that mother herself was 12 years old, right? So obviously कि वो बहुत ही ज्यादा sweet लग रही होगी. So she is telling that she a sweet face, my mother's, बहुत ज्यादा sweet लग रही थी. And this was the photo when that was before I was born, that is the poet was born, उसके पहले का photo था. And the sea, which appears to have changed less. अगर आज भी वो जहां का भी जो भी सी था, राइट, वो आज भी वैसा का वैसा ही होगा समवेयर, राइट, उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं आया होगा. washed their terribly transient feet, right? what is transient feet? Transient मतलब कहते हैं कि temporary or impermanent. See, we all visit to a sea, right? तो वहां पे तो वो टेम्पररी फिट्स होंगे. टेम्पररी फिट्स यानी वहां पे बहुत सारे लोग आते जाते होंगे,
राइट. इट्स जस्ट सी के लिए तो ये कॉमन बात है, लोग आते हैं जाते हैं, बट फॉर अस, हम उस सी को विजिट करते तो हमारे लिए वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, राइट. तो सी तो आज भी वैसे का वैसा ही है और वही है, वो कहीं नहीं गया है, राइट. सो वॉच्ड दैट टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, तो ऑब्वियस है वहां वो कजिन्स और मदर वहां विजिट किए होंगे, उनके फिट होंगे, राइट. बट दैट इज टेम्पररी, ऑब्वियसली इट इज बीइंग वॉच्ड बाय द सी. ओके. Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. कुछ 20-30 साल के बाद उसकी मदर she had laughed at the snapshot. वो उस फोटो को देखकर हंस रही है. See Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach. What happened? She is laughing, looking to at the snapshot, and she is telling, see how Betty and Dolly looks. Okay. And again she laughs and say how they dressed us for the beach, right? मम्मी और whosoever कि कैसे हमें कपड़े पहनाए थे, वो कपड़े देख के भी हंस रही है और बैटी और डॉली को देख के हंस रही है कि वो कैसे लग रहे हैं. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. The poet क्या कह रही है कि the sea holiday which is being visited by her mother, वो उसका past था, right? किसका? Mother का past था. But right now the mother is recalling that day and describing everything to that poet. तो अब ये poet का है, right? क्या है कि उसकी मदर उस स्नैपशॉट को देख के जो खुश हो रही थी, द वे शी वॉज लाफिंग, राइट, वो जो मेमोरी है, अब वो मेमोरी किसके पास है? पोएट के पास. तो यहाँ पे दो मेमोरीज डिस्क्राइब हुई है. वन इज द सी हॉलीडे ऑफ मदर, राइट. सो जो मदर ने वो जो सी हॉलीडे एंजॉय किया वो उसकी मेमोरी है. बट नाउ पोएट की मेमोरी क्या है कि उस सी हॉलीडे के फोटोग्राफ्स देखकर मदर जो हंस रही है, वो जो खुशी है, राइट, वो खुशी हु कैन एबल टू सी, दैट इज द पोएट, और वो पोएट के लिए उसकी मेमोरी होगी. बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. आज दोनों ही नहीं रहे, राइट. कौन दोनों नहीं रहे? वन इज हर मदर, राइट, शी इज नो मोर नाउ. अनदर थिंग के वो जो मेमोरी थी वो भी अब, मतलब जो उसकी मदर की जो मेमोरी थी वो भी अब नहीं रही. मतलब आज दोनों ही नहीं है. द सी हॉलीडे वॉज आर पास्ट, वो जो एक एंजॉय किया था उसकी मदर ने, आज वो उनके साथ ही, मतलब आफ्टर हर मदर्स पास्ड अवे, राइट, वो मेमोरी भी उनके साथ चली गई. ओके. और पोएट के लिए जो उसकी मदर की जो उसकी जो मदर थी वो चली गई, शी इज नो मोर, राइट. सो आज दोनों ही नहीं है, सिर्फ क्या रह गया है? पोएट के पास एक ही वो एक मेमोरी जो वो फोटो के साथ उसकी मदर को लाफ करते हुए देखा, राइट. विथ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. लेबर्ड यानी बहुत डिफिकल्टी के साथ हमें वो चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उस लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट, कि अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट. सो बोथ राइट with the labored ease of loss. Wry, WRY, that is we pronounced as wry, right. तो ये क्या है? That is we can say a type of ironical, okay, ironical चीज है ये, right. Or we can say that the thing which is happened we cannot change, a saddest part of our life we can say. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, right. क्या बोल रहे हैं पोएट्स के? नाउ शी इज नो मोर, ओके, वो शी इज डेड, बिन नियरली एज मेनी एज ईयर्स. आज उस बात को बहुत वक्त हो गया, राइट, उसके मदर को डेड हुए. एज दैट गर्ल लिव्ड, बट that poet is still alive, right, and she is being missing her mother and recalling that day with related to that photograph. And of this circumstance there is nothing to say at all. Or is circumstance mein when she is recalling her mother's laughter, right, when the poet is recalling her mother's what we can say ke, a photograph which she is describing, right, that day she is being silent in emotional way, right. What she is telling ke ab is circumstance mein when she is no more, we have only that memories of her, and there is nothing to say at all, right. It's silence, silences, right. See, sometimes silence speaks more than words,
राइट. सो बहुत बार बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं बोलने से भी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं. तो यहाँ पे इतनी poet is being so much emotional that she is not finding any words to say in such circumstances, and she remains silence. Okay, so here our poem ends. Okay, and hope to you got this poem properly, the feelings of the, what we can say, that poets mothers, all such memories and everything. We also somewhere recalls our loved ones who is no more today, right? Every memory is related to them, and we also being emotional for that, but we don't have any options rather than being emotional or being just lived in that past. Okay, हम उस मेमोरीज को सिर्फ रिकॉल कर सकते हैं या उन्हें याद कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते. राइट. तो ये जो ग्रीफ है वो हमेशा रहता है हमारे पास, हमारे साथ, कि वी कैन नॉट, व्हाट वी कैन से, कि वो डेज हम वापस नहीं ला सकते. राइट. सो द पोएम एंड्स हियर. नेक्स्ट, so next we are going to discuss that is the figures of speech, but right now I'm ending this lecture here. In the next lecture we'll discuss all the figures of speech in this poems in detailed manner, right? So wait for our next lecture. Bye bye, take care.